बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली अल्लाह मदद फरमा। तो आज का हमारा टॉपिक जो मूसा का टॉपिक है और मूसा का वो किस्सा जो हमने अपनी ज़िंदगी में बारहा सुना है। And recently we had sent out a farman of Sultan Muhammad Shah, may our soul be sacrificed to their Imam. He is talking about the Musa in his farman, a very lengthy farman. The story that Mullah says in his farman and the stories that are written in the books like Sarair and Qasus al-Anbiya, and then stories that is said in the Quran. स्टोरी जो अपनी जगह पर है वो सही है, लेकिन रिमेंबर कि ये स्टोरीज जो है वो कहानियाँ नहीं है, they are there to guide us. For example, the story of the Musa in the Quran, if it was just a story, then Quran will be the book of stories. But Quran is a book of guidance. Faramin is not the farman of the stories, but farman to guide us. So, जो भी story आपने सुनी है मूसा की, and you will see they are all different stories of Musa. Have used different phrases, different words, but today we will listen to another story or another way of listening to this story, जो हमने हमेशा वाइजों में और हर जगह पर सुनी है. But at the end, we will come to find out that this story of Musa was actually not the story of Musa. It was the story of you. It will be your personal story, each one of us. हमारी सबकी personal story. And then we will see कि किस तरह से वो हमको guide करती है वो story. Because otherwise, it's just a story. और stories बच्चों के लिए होती है, adults के लिए नहीं होती है. So how do we benefit from this story of Musa, the one people have been benefiting from for last how many years now? 3,000 years. So the story goes that one day Musa was in presence of Khudawan Ta'ala. You all know his title was Kalimullah, the one who spoke to Khuda. Kalimullah, Khuda se baat karne wala. So one day in the presence of the Lord, वो खुदा को पूछता है कि just for my curiosity, is there anyone in this world, the one whom would have more knowledge than me? And Allah फरमाते हैं उसको कि ऐसा करो, go down to so and so river, a junction of a two river, and you will find this buzruk shakhs, and you ask him, and then you will know that how much knowledge he has. And Musa says, where would I find this junction of two rivers? The story is not logical, right? अभी मूसा ने क्या बोला था कि क्या मेरे पास जो इल्म है वो किसी के पास भी है दुनिया में? अभी बोलता है मेरे को वो पता नहीं है जगह के जहां पर दो दरियाओं का जंक्शन है. He said, where will I find those junction of those two rivers? So Allah guides him. Go down to your town, take a dry fish और उसको जला देना, उसका भूसा बना देना. Just make the ashes out of it. Take it with you. And
wherever this fish becomes alive, that would be the place of the junction of those two rivers. Musa bolta है okay. He comes down from the Kohetu, goes into town, to his own town, and take the Harun, his brother, with him. And they take the fish, the dry fish, the burnt fish, the ashes of the fish, in a handkerchief. So लेके चलते हैं. And Musa says to Harun, I don't know how far this place is, but we will not rest. We will not rest until we reach that junction, until we find that Buzruk Shakhs. Because now I'm curious that who is this one person in the world who has more knowledge than me? So they both start the journey. चलते 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 थक जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं. मूसा थोड़ी देर आराम करता है, उठता है, अपने भाई को बोलता है चलो, let's go, let's keep moving. So they start to walk again. As soon as they start walking again, Musa says, oh my brother, I'm hungry. Pull out the fish, let's eat the fish, I'm hungry. What is the other illogical thing in this? Remember, वो fish तो जली हुई थी. It was just ashes. लेकिन मूसा बोलता है कि निकालो फिश को, हम खाते हैं, भूख लगी है मुझे. What I'm trying to say in this story is, I have told you two illogical things. Everything onward, you need to figure out the illogical things. So you can use your brain and see in this story कि कहाँ कहाँ पर illogical बात है. So you may ask question. Okay. इसका भाई बोलता है, oh Musa, I forgot to tell you कि जब तू सोया हुआ था, I went to wash my hand in the river, और मेरे हाथ में कुछ पानी था. जब मैं आया तो वो पानी हैंडकरचीफ के ऊपर गिरा और वो मच्छी जिंदा होकर पानी में उतर गई. उसको बोलते वो कौन सी जगह थी? पता वही तो जगह है कि जहां पर there is a junction of those two rivers. तो वो वापस लौटते हैं. जब वो वापस लौटते हैं, then they see this Buzruk Shakhs sitting under a tree. वो बोलता है, oh, so this is the place and this is the Buzruk Shakhs that we've been looking for. So they wait for this Buzruk Shakhs to come out of the ibadat. So when he comes out of the ibadat, he says, okay, so I see you guys are here. Are you guys ready to go on the travel? Are you ready to walk with me? And Musa says, yes, I am. And Buzruk Shakhs says, but there is one problem. I don't see too much patience in you. मुझे नहीं लगता मूसा कि तू सब्र करने वाला है. Remember, if you guys have read the stories of all the prophets, Musa was one of the most jalali farishta, one of the most jalali pegambar. He was not an ordinary pegambar. He was one of the highest ranked pegambar. बहुत ही जलाल वाला पैगंबर था. उसको ये बुजुर्ग शख्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तेरे में सब्र है. वो कलीमुल्लाह है जो खुदा से रोजाना बात करता है. He cannot be a normal person. लेकिन उसको वो बोलता है कि I don't see too much patience in you. मूसा बोलता है I promise कि मैं पेशेंस रखूंगा. सेकंड कंडीशन, यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन. ऐसा बोलता ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा. चलो दरिया के किनारे जाते हैं. एक कश्ती खड़ी होती है. उसको बोलते हैं कि हमको सामने की तरफ जाना है, कैन यू टेक अस ओवर देयर. कश्ती वाला बोलता है दोनों बुजुर्ग आदमी है, कहाँ मैं इसके चार्ज करूंगा. आई विल टेक यू गाइस फॉर फ्री. आई गिव यू फ्री राइड टू दैट साइड.
दोनों कश्तियों में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ उतरने से पहले खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती के अंदर खड्डा कर डालते हैं। Just before they get out from the boat, he makes a hole in their boat. And Musa flames up. He gave us a free ride. And we are the people of the God. क्यों हम किसी का नुकसान करेंगे? Why would you put a hole in this boat? And Khizr says, did I not tell you I don't see any patience in you? You need to go back. I'll go on my way, you go on your way. Musa बोलता है, okay, sorry, I will not ask another question. They continue. गांव के अंदर पहुंचते हैं. As soon they reach this small town, कुछ बच्चे खेल रहे हैं. Khizr picks one of the child and kills them. Musa बोलता है, what's wrong with you? Do you know this child? Well, why did you kill him? Well, I know why I did it. And I told you, if you ask me a question, then you go on your way, I'm going on my way. I don't see much patience in you. Musa बोलता है, okay, all right, sorry, I will not ask another question. Teach me and I will continue with you. बोलता है, okay. They continue. शाम हो जाती है, they are getting hungry, so they go into this small town and ask them if they can feed them. टाउन वाले बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो यहाँ पर बादशाह है, हमारा जो गांव का बड़ा है, उन्होंने हमको मना किया है कि ये लोग जो बुजुर्ग लोग आते हैं, मौलाना लोग, they come to preach and they will take you away from our religion. So don't feed them, don't do anything with them. Just run them away from the town. उसको खाना नहीं देते हैं, दोनों को भगा देते हैं गांव में से. While they are coming out of the town, they see this wall. And wall is crumbling down. Khizr Musa को बोलता है, help me. I want to fix this wall. Musa says, why do you want to fix this wall? These people in this town, they don't deserve our help. आप क्यों इस दीवार को बनाते हैं? आप इस दीवार को ना बनाएं. But Khizr doesn't listen to Musa. वो दीवार को बना लेता है. After he builds the wall, Khizr stops Musa and says that I cannot continue with you. तुम अपने रास्ते पे जाओ, मैं अपने रास्ते पे जाता हूँ. क्योंकि तुमने वादा किया था कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. मूसा बोलता है कि ऐसा नहीं, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. I want to learn from you. खिज़र बोलता है कि before we become apart and you go on your way and I go on my way, let me tell you the tawil of those three things. The first boat जिसके अंदर मैंने खड्डा किया था, the reason I did that because I knew कि इसके पीछे जो एक पायरेट आ रहा है, एक डाकू आ रहा है, एक बादशाह आ रहा है कि जो सबकी कश्तियों को लूट लेता है, सबकी कश्तियों को लूट लेता है. और तो मैंने उसकी कश्ती में खड्डा कर दिया. अब वो खड्डे वाली कश्ती उसके काम की नहीं है, डाकू के काम की, द पायरेट्स के काम की वो कश्ती नहीं है. So he will leave this poor man alone and he will not take the boat from this poor man. So I did the poor man a favor by putting a hole in his kashti. I knew he did not know. Then the child, उसके माँ बाप जो है ना वो बहुत अच्छे हैं. Remember the child that he killed? His parents are good people, God-fearing people. लेकिन ये बच्चा जो है ना, if he had grown up, he would have bothered the parents. वो अपने माँ बाप को
अच्छी तरह से नहीं रखता, उसको तकलीफ देता जब वो बड़ा हो जाता, चूंकि मैं जानता हूँ सो आई किल्ड हिम। एंड देयर वॉल, उस दीवार के नीचे देयर इज अ ट्रेजर अंडर देयर वॉल, बिकॉज दिस पीपल ऑफ दिस टाउन दे डोंट डिजर्व दिस ट्रेजर, मैंने इसके ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी। और ये ट्रेजर जो है वो 2 यतीम बच्चों का है। तो जब वो यतीम बच्चे बड़े हो जाएंगे, when they grow up, they will find the treasure and they will take the treasure out of the under the wall. And because these people of this town they don't deserve this treasure, तो मैंने इसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी ताकि वो उसको लूट ना ले। ये 3 तावीलात बताते हैं उनको किधर, और मूसा अपने रास्ते पे जाता है और किधर अपने रास्ते पे जाता है। यहां पर अगर आप कुरान के अंदर पढ़ेंगे तो खुदा जो है ना यहां पर गुलाटी मारता है। यू नो व्हाट दैट मीन्स? गुलाटी मारता है। ही चेंजेस हिज सब्जेक्ट। ऑल सडन ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जुल्करनैन, ही फॉरगेट्स अबाउट द मूसा। फिर मूसा का क्या हुआ? रिमेंबर ही केम ओवर हियर टू लर्न, डिड ही लर्न और नॉट? Looks like God forgotten about the Musa and he started talking about Zulkarnain. All of a sudden, if you look at the Quran, one ayat to the next, you will be like, what happened over here? And for today, we will not go into Zulkarnain's story yet. Let's stop here and talk about Musa की story. अब मेरे को ये बताएं, इस स्टोरी को हमने कितनी मरतबा सुना, पढ़ा हमने फरमान के अंदर भी, कुरान के अंदर भी पढ़ा, किताबों के अंदर भी पढ़ा। What is there for us to learn? You know, you may say, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। You think you'll be able to hold the patience अगर आपके सामने किसी बच्चे को मार डालें? You will not be able to. That was the wrong thing to do. Why would you not say something? Why would you put a hole in somebody's boat? You would not be able to hold yourself. You would have to say something because that's the wrong thing to do. Lekin, this is not Musa's story. And remember, Musa was one of the Jalali Farishta, Jalali Pegambar. वो खुदा से इतना करीब था कि वहां पर कोई गुरूर की बात नहीं आ सकती है कि वो गुरूर करे कि क्या मेरे पास इतना इल्म है या किसी और के पास इतना इल्म है। That is not the case. He was one with Allah. तो whatever अल्लाह के पास इल्म था वो उसके पास इल्म था। तो ये बात ही खत्म हो गई कि मूसा ने ये पूछा कि is there anyone else who has more knowledge than me? ये पैगंबरों का शेवा नहीं होता है। This is not the story of पैगंबर, because they are one with Allah, right? So there is no way that he would have asked that. So this cannot be the story of him. अब ये स्टोरी किसकी है? एक्चुअली ये स्टोरी हमारी है। देखें किस तरह से ये हमारी स्टोरी, स्पेशली जब आप इल्म के अंदर आते हैं, जब आप इल्म के अंदर आते हैं। Remember a while back I was saying, if some Mukhi Sahib asked me to stand on in the Jamaatana, and if I was telling this story, ये स्टोरी कहाँ खत्म होती? यहाँ पर खत्म हो जाती। यहाँ पर ये स्टोरी जमातखाने के अंदर खत्म हो जाती, इसके आगे नहीं चलते हम।